तो यार काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अपने आप को डिसिप्लिन में लाना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, पढ़ने के लिए तो खास कर, है ना। जो अभी मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ओरिएंटेशन एरर, वो 2-3 बार आ चुका था, तो मैंने अपनी छोटी छोटी लाइव कैंसिल करी और फिर इन थर्ड टाइम इट वर्कड फाइन फॉर मी। सो हाय एवरीबॉडी, माय ज़ीरो व्यूअर्स। देखते हैं लिंक लिस्ट मैराथन का, कल मैंने लास्ट लाइव में बोला था बट नहीं करा, देख रहे हो। सिंसियरिटी, विद दिस सिंसियरिटी कोई कंपनी क्यों लेगी तुझे यार। ठीक है, तो क्या करना चाहिए आज। आज देखते हैं, आई थिंक अभी ट्री स्टार्ट कर ही दिया तो ट्री पे ही फोकस रख। कल हमने करा था, क्या कल हमने लेवल ऑर्डर ट्री कर लिया था। कल हमने लेवल ऑर्डर ट्री कर लिया था, यस, यूजिंग queue. Basically, we made a queue and then we stored our element and that and printed according to our desired output. See, this is the problem. पढ़ाई करनी शुरू करो, नींद आनी स्टार्ट पहले हो जाती है। ओके ओके, in end of this month I'm going to give yourself a surprise announcement, or basically मैं एक सरप्राइज अनाउंसमेंट तो क्या ही है, वो मैंने सोच रखा है। लेकिन उसके लिए पहले मैं अपनी डेडिकेशन चेक करूँगा, अगले 10 दिन, 11 दिन, है ना, और टोटल हो जाएंगे 15 दिन। तो अगर मैं 15 दिन कंटिन्यू करता हूँ तो मैं एक अनाउंसमेंट करना पसंद करूँगा। आइटरेटिव प्री ऑर्डर traversal of binary tree, iterative in order traversal of binary tree, pre-order traversal of binary tree using 2 stack, pre-order binary tree using 1 stack, binary tree traversal in binary tree. The recursion traversal for a binary tree is very easy, but it is very difficult to traverse using. Yes, you got that right. Using iterative. I have to think a bit to put words on my mouth in English. English it's नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। थोड़े से मोटिवेशन की बात कर लेते हैं कि अगर भाई अच्छी जगह जाना है, निकलना है, तो नींद तो त्यागनी पड़ेगी और ज़िद करनी पड़ेगी फिर से। और इसके अलावा दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो सब तो करना ही पड़ेगा, उनसे अच्छा भी करना पड़ेगा, तभी जाके दूसरों से बेटर तुझे चीज़ें मिलेंगी। और सबसे पहले तो इस चीज़ को काम करना ना बंद कर। आई एम हाईलाइटिंग कि भाई जब भी जो भी देखेगा ना, बहुत गलत है ये चीज़। ठीक है, तो अभी इस 1 घंटे में मैं क्या करूँगा, 2, 4, 5 क्वेश्चन है ये, 3 ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, इनको आइटरेटिव मेथड से करना है। अब 5 क्यों बोल दिए मैंने, क्योंकि जो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, तो टोटल हो गए 4। और एक और ट्रैवर्सल है जिसके अंदर हम करते हैं पोस्ट प्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। एक ही ट्रैवर्सल के अंदर हम तीनों
को निकाल लेते हैं. We calculate all three using one. So the very first one, iterative preorder traversal of a binary tree. Very cool. अब यार इसके अंदर अगर सोचे तो क्या होना चाहिए. एक वेक्टर बनना चाहिए बहुत सही. सबसे पहले तो जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे और रिटर्न करेंगे. इसके अलावा अगर हम किसी ट्री के एग्जाम्पल को देखें तो हमें आइटरेटिव चलना है. सबसे पहली चीज़ प्री ऑर्डर है. प्री ऑर्डर का मतलब हो गया डेटा लेफ्ट राइट. राइट, ओके, बहुत ठीक. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम डेटा जैसे ही आएगा हम स्टोर करा लेंगे. बहुत बढ़िया. इसके बाद इसके बाद हमें लेफ्ट में जाना है. लेकिन लेफ्ट में जाने से पहले हम राइट को स्टोर करा लेंगे. तो इसे हम स्टोर कराएंगे किसी स्टैक के अंदर कि जैसे ही हमारा ख़त्म हो तो हम स्टैक से निकाल लें. यहाँ हम, हाँ बिल्कुल सही, तो हम यूज़ करेंगे एक स्टैक. ठीक है जी. तो स्टैक कह सकते हैं या फिर वेक्टर कहें. Okay, so we can create a stack tree node. Inside those stack, we will start with stack dot push root. Okay, and while there is stack, so what should I do? Stack dot empty. It means we what we'll do is auto temp equals to st dot pop st dot top first, and then we will st dot pop. So if temp dot uh, right exists, so st dot push temp dot right, and if temp dot left exists, then st dot push temp dot left, and then we'll do result dot
back well. Mosam is changing very fast. Okay, so we'll return result and we'll run this code. It is it is giving the compiler because I have done a grammatical mistake in writing auto. I have oh it got accepted. I was so underconfident for this particular uh, iteration, but it worked fine in very first try. It got accepted. That is cool. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, दैट इज iterative in order traversal of binary tree. Ooh, super. It means we have to first store the left, then data, then right. So we have to dig deep inside the leftmost. एंड एक क्वेश्चन होता है जिससे जिसे हम लिंक करके भी करते हैं, लिंक सॉफ्ट लिंक्स बनाते हैं. विल डू दिस कभी और. सो ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं. हम ऐसे करेंगे, हमारे पास 5 क्वेश्चन है तो सबके लिए 10 10 मिनट लेंगे और अगले 10 मिनट कुछ बात कर लेंगे. ठीक है. और ये रहेगा, पहले 5 मिनट ट्राई करेंगे, नहीं तो कोड करेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर. ठीक है. अभी इन ऑर्डर कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे लेफ्ट में जाएंगे. जैसे मिला तो स्टैक से निकाल लेंगे, प्रिंट कराएंगे और राइट में चले जाएंगे. ओके. और अगर राइट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे कि सो विल स्टोर इट. अगर राइट नहीं मिला तो हम स्टैक से निकालेंगे एक और एलिमेंट को डायरेक्ट. एज सिंपल एज दैट. ठीक है जी. स्टैक बनाएंगे, स्टैक के अंदर
स्टैक के अंदर पुश करते जाएंगे और करंट को करंट और लेफ्ट करते जाएंगे। बहुत सही है। और हम क्या करेंगे, स्टैक को निकालेंगे, उसमें डाल देंगे, एसटी से पॉप कर देंगे और करंट को कर देंगे करंट डॉट राइट। ये देख रहे हो यार, ये आदत ही क्यों, क्योंकि मैं बहुत सोचता हूँ जब तो ऑटोमेटिक यहाँ हाथ लगता है। हाय एवरीवन जो भी है, वन व्यूअर ट्राई कर रहे हैं भाई। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कर रहा हूँ, मैं एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर मैं ट्री कर रहा हूँ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। और इसके अंदर मैं what I'm trying to do is to solve the in order traversal using iterative method. So for that, so for that, let me just set up. So for that, we are going to create a stack in which we एक व्यूअर यार चला गया। लेकिन उससे पहले मैं ये कह रहा था, मैं ये काफ़ी फोकस्ड होकर जब सोचने लगता हूँ तो अपनी मूंछों को उखाड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। दैट इज़ नॉट अ कूल थिंग टू डू। सो ठीक है। So back to work tree node st and and we'll create a tree node slash current equals to root, and while st dot empty, whenever current exists you have to, let's say whenever, we will do whenever true. So if current exists, then current equals to current dot left. And before doing that, we are going to stack this current into stack dot push s c u double r. Okay. And else we are going to do, if we'll check if our stack is empty, then we will break the system and we will store st dot top, then we'll do st dot pop, and also we'll store our top value of top node to result vector. Result dot pushback, we'll, we'll store result dot push.
Visual load pushback will store damp well, and after that, if damn dot damn dot right exists, no need to check that. Just simply do current equals to damn dot right and simply return result. So I am able to do the in-order traversal as well pretty easily. Oh, oh, but I got late post order traversal of binary using two stacks. So I can use whatever I want, but I have to uh, give a result for post order traversal. So what we have to think for post order traversal? तो स्टैक का यूज़ करना है मतलब not necessarily if you have different approach for iterative method you can use that as well. I'm sure it can be solved using two stacks only. So let's say we have a tree, we have to print left then right then data. So go to left. If left is empty, then simply check for its right and then so did I ever sold it using two stack? Let me check that first or two stack or one stack. Hmm, it look like I haven't sold it ever. I haven't sold the post order traversal using two stack. That is the reason I'm not able to get the approach because you haven't sold it. Okay, so okay. So
Think for a minute, how can you solve it using two stack? And for any matter, how can you solve it? We'll go to extreme left, and once we reach null, then we check for right, and then we print data. And we will pop out the stack, go to its right, and do the same thing again. We'll take a stack, we will put left, left, then 4. Okay, then null. If null exists, left, then we will do we pop should we pop out the stack? Uh, Maybe no. Let's not pop out the element. ओके माना तू है सिख जहाँ से होना चाहिए वहीं से है तो दिख न नजरों में आ न मुझको तो दिख मैं तोड़ूंगा दिल तेरा लेके ही तो लिख भी किसी से भी पूछ चलो ना टू मच है बोली में थोड़ा हरियाणवी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपने मेरे बारे में वो सारे सच है this is how the reels are going to impact you but you have to be focused you have to be concentrated okay if st on the top exists st1 से निकालो st2 में पुश कर दो if root dot left exists st1 dot push root dot left if root dot right exists then पहले राइट में डाल दो सबसे दो स्टैक लूप पहले स्टैक के अंदर सबसे पहले आप रूट को डाल दो और फिर एक वाइल लूप चला दो निकालो दूसरे स्टैक में डाल दो फिर इसके अंदर लेफ़्ट डालो फिर राइट डालो ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ़्ट नीचे आएगा राइट ऊपर आएगा राइट को उठाओ डालो फिर लेफ़्ट को उठाओ डालो तो जब आप प्रिंट कराओगे तो आएगा लेफ़्ट राइट डेटा ओके तो लेफ़्ट और राइट तो राइट का भी फिर उसके बाद लेफ़्ट और राइट एज इट इज़ प्रिंट होता जाएगा
सो हमने रिवर्स गेम खेल दिया, राइट। समझ में आया स्टैक में कैसे कर रहे हैं हम। स्टैक के अंदर हमने रिवर्स गेम खेला है यूजिंग टू स्टैक पोस्ट ऑर्डर के अंदर। ठीक है, इस गेम को हम यहाँ खेल के देखते हैं। स्टैक ट्री नोड बहुत बढ़िया। st1 डॉट पुश रूट while st1 dot empty स्टैक वन एम्प्टी है। तो क्या करना पड़ेगा, चेक करेंगे सबसे पहले वाइल लूप में कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे कि एक टाइम वेरिएबल बनाएंगे ट्री नोड का, उसके अंदर हम st1 डॉट टॉप को स्टोर कराएंगे, फिर st1 डॉट टॉप को st1 को का एलिमेंट पॉप करा देंगे। उसके बाद हम अपना st2 के अंदर स्टोर कराएंगे st2 के अंदर हम स्टैक 2 के अंदर हम अपना स्टोर कराएंगे टेम्प वैल को, टेम्प को, और इफ टेम्प लेफ्ट एग्जिस्ट देन st1 डॉट पुश टेम्प डॉट लेफ्ट राइट, बिकॉज राइट अब ऊपर रहेगा, उसके पास रहेगा। so while st2 not empty result dot push back result dot push back st2 dot top well or st dot pop is so did it using two stack. Now it's time to do it using one stack. So we are store.
Move to the left child. Backtrack as the current node as the left. Post order using one stack. Push. Then go to the. Oh, यार इन दोनों को मैं सुबह देखूंगा श्योर. Using one stack post order, using one stack, and all those three traversal in one iteration. एंड लिंक्डइन मैराथन भी कल सुबह सुबह ज़रूर करूँगा मैं 100%. सुबह जल्दी उठूँगा. अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा बाय.